In 2021, India was down and out. 36 all out in Adelaide, and everyone had written the team off. A lot of people said it was sure to be 4-0. That is when India turned it around. And one must say, against all odds, boys became men. And all of a sudden, we had a new India. The man who did that as skipper was Ajinkya Rahane. Rahane stood tall and scored one of the best test match hundreds that you will possibly see at the MCG. Boxing Day test match, huge occasion, and the captain stood up and made a difference. It was an innings that had a telling impact on the series. From nowhere, India was back. And how? When everyone was saying that India would lose 4-0, Ajinkya Rahane made sure that it was 1-1 going into the New Year test in Sydney. And thereafter, what happened was historic. Again, India goes into Australia at the back of a humiliating 0-3 whitewash against New Zealand. The team is down, and I have to say, out. We need Rohit Sharma to do an Ajinkya Rahane. Do what he did in 2021. Lead from the front, score big runs, and herald a turnaround. What was Ajinkya's theory? What did he do? How did he change things? How did he score that amazing 100 in Melbourne? We had asked Ajinkya Rahane all of these questions at that point in time. This is a throwback. Looking at what Ajinkya Rahane did. Can Rohit Sharma do that? Take a look. It's interesting that 1 year back, this man was the toast of the country. Australia, it was him who won us that series. And I want to make that very clear. It was Ajinkya Rahane in Melbourne with that 100. It was Ajinkya Rahane in Sydney, in Brisbane, under his leadership, with Virat back at home at that point in time. India won an incredible series. So just 1 year back. 1 year down the line, everybody is baying for Ajinkya Rahane. Oh, you know what, his career is over. Let's get him out of the test team, etc., etc. Is it fair? How does he react to it? He's not spoken. He's been silent. So this will be as candid as we can get. So Arju, 1 year back, the darling of the country, 1 year later, career finished. You have seen it all, but how do you react to this? I just smile it because people who generally know the sport, they'll not talk like that. So I don't want to get too deep into it, but everyone knows it, you know it, what happened in Australia. Even after that, even before Australia, the contribution which I made, especially in red ball cricket, I don't want to talk about it, but Australia was really special. And as I said, people who know their sport, love the sport, they'll talk sensibly. It's important. Is that important? Is that a statement that I'm absolutely still there for Indian cricket? Absolutely. For me, that's what matters. Playing cricket right now, Ranji Trophy is happening, which I believe is the tournament in our circuit, and it's good that BCCI they've taken the decision to go on with the Ranji Trophy so that everyone will get the match practice. And yes, I'm really looking forward to it. The other point I want to ask, and I know I'm asking you critical questions. ये जो press में आता है, paper में आता है about contracts and वगैरह. But आपने तो consciously red ball cricket को prioritize किया है देश के लिए. Isn't that something that should be recognized? Yes, absolutely. Red ball cricket is the ultimate format. Test cricket is the ultimate format. और सभी लोगों ने ये कहा है. मैं इससे पहले white ball cricket भी खेलता था. Unfortunately, I got dropped from white ball team. That was not in my hands. But again, focusing on red ball cricket since last 3 to 4 years. 2018 के बाद मैं white ball cricket नहीं खेला हुआ internationally. उसके बाद red ball ही खेल रहा हूँ. So red ball is the ultimate platform, ultimate
thing to actually do something special. और वो आपने भी देखा है, इतने सारे टेस्ट मैचेस हम खेले हैं, हर एक सेशन में मैच चेंज होते रहता है, गेम चेंज होते रहता है. देन if you are back, you have to come back and then again build it on and then do something well for the country and for your team. So yes, red ball is the format. How important is Ranji Trophy to get India's red ball cricket in that zone again? Because clearly it has not happened for 2 years. So your thoughts on that? Second question, going back to the basics again. As part of Mumbai, you will play, Prithvi will captain. Going back, you've captained India, but to go back to domestic cricket and play, your thoughts on that? First of all, I'm really happy that Ranji Trophy is happening, and as I told you that thankful to BCCI, जिन्होंने रणजी ट्रॉफी करने का ये अपॉर्चुनिटी सारे प्लेयर्स को मतलब अभी मिलेगा. So I'm really thankful कि रणजी ट्रॉफी हो रहा है because of our BCCI. And going back to basics, as you said, इसी के वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ. 5-6 साल रणजी ट्रॉफी में परफॉर्मेंस करके, डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करके मैं यहाँ पर आया हूँ. सो बहुत बार होता है कि आप इंटरनेशनल में जाते हो और एंड देन सडनली यू कम बैक टू रणजी ट्रॉफी और फर्स्ट क्लास क्रिकेट. वो माइंडसेट नहीं रहता है. बट फॉर मी इट्स ऑल अबाउट whatever cricket I play, whatever team I play for, it's all about giving my best, playing with that attitude, and I feel whoever is available, they should look to play Ranji Trophy. अगर कोई मैचेस नहीं है, शेड्यूल में कोई गेम्स नहीं है, they should look to play Ranji Trophy. अगर बड़े प्लेयर्स या सीनियर प्लेयर्स आके रणजी ट्रॉफी खेलेंगे तो इस टूर्नामेंट का और मजा आएगा. यार ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कह दिया, क्योंकि अगर सीनियर प्लेयर्स खेलेंगे तो जूनियर प्लेयर्स भी उनके साथ मिलके वो एक्सपीरियंस गैदर कर पाएंगे. आप ड्रेसिंग रूम में होना मतलब मुंबई का जो यंगस्टर्स हैं वो आपसे सीख पाएंगे. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट बिकॉज आई हैव नॉट सीन, आई मीन ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द रिगर्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, our best players have not been able to play Ranji Trophy, Arju. In that sense, you and Pujara playing for Saurashtra and Mumbai is a very important statement. Your thoughts? Yes, I think whoever is available, they should look to play Ranji Trophy. See, it's tough nowadays क्योंकि हम लोग continuously क्रिकेट खेल रहे हैं, schedule is so busy. But अगर कोई क्रिकेट नहीं है, अगर कोई प्लेयर इंजरी के बाद आ रहा है या कम बैक करने देख रहा है या अवेलेबल है, एक महीने के लिए कोई टूर्नामेंट नहीं है, then they should look to play रणजी ट्रॉफी अगर उस वक्त ये टूर्नामेंट हो रहा है तो. यार मैंने आपसे 18 मिनट बात कर लिया, मैंने कांस्टेंट गोली चलाया आप पे, एक क्वेश्चन के बाद एक. यार कुछ अच्छे सवाल भी पूछ लेता. और आपने जिक्र किया ऑस्ट्रेलिया में आपने कुछ डिसीजंस लिया है, एक दो तो बताओ यार, कौन सा डिसीजंस यू आर स्टिल वेरी फॉन्ड ऑफ दैट अकॉर्डिंग टू यू हैड अ टेलिंग इंपैक्ट? बिकॉज देखो कैप्टन अजिंक्य रहाणे को हमने अकॉर्डिंग टू मी उतना सेलिब्रेट नहीं किया है, वो हमें करना चाहिए था. यस वी सेलिब्रेटेड दैट सीरीज, बट शायद कैप्टन अजिंक्य रहाणे को सेलिब्रेट उतना नहीं किया है, करना चाहिए था. सो 2 or 3 decisions that according to you still remember with fondness, whatever you remember, whatever you want to tell. बोला था, I think the decision which I took in Melbourne, अश्विन को 9th ओवर में लाने का, that was completely instinctive and that played off really well. Got Matthew Wade out and Steven Smith out in 2 overs, and वहां से गेम, मैं ये नहीं कहूंगा कि गेम सीधा हमारे पास में आया, बट हमें एक मोमेंटम मिला कि 2 विकेट जल्दी मिले वहां पर, एंड देन फास्ट बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग करके हमने उनको ऑल आउट किया. बट दैट वाज अ डिसीजन, दैट वाज प्योरली ऑन माय इंस्टिंक्ट, क्योंकि विकेट वाज लुकिंग डैम. जब फास्ट बॉलर्स डाल रहे थे 3-4 ओवर जब डाले उन्होंने, मुझे लगा कि अश्विन को यूज कर सकता हूं मेलबर्न में, यही वक्त है, क्योंकि एक बार विकेट अच्छा होने के बाद बहुत कम होता है कि स्पिनर्स को असिस्टेंस मिले. सो दैट वाज द डिसीजन. उसके बाद भी मतलब थे कॉल्स, बट सी आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट, क्योंकि दैट विक्ट्री वाज सो स्पेशल. मेलबर्न विक्ट्री वाज स्पेशल, द सीरीज वाज सो स्पेशल फॉर अस. सो मुझे वो टीम का क्रेडिट नहीं, मैं आपको क्रेडिट लेने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं. आप दूसरा सवाल ये था, अश्विन वाज अ ग्रेट कॉल. आई मीन आई रिमेंबर मैथ्यू वेड डांसिंग डाउन द ट्रैक एंड देन दैट हाई कैच and beautiful, and then Steven Smith again beautifully bowled leg stump, leg side पीछे. But that 4th test, 7 players not there,
leading a team with top 7 not there. Obviously, the responsibility of the leader becomes that much more. How do you look back to that? So for me, it was all about keeping it really simple, not to worry about the result or what people will talk or what people are talking about us. कि ये टीम कैसी है, क्या करेंगे, क्या होगा ये टीम का. So it was all about giving our best. The message was completely simple. Just think about we were कि हम लोग रणजी ट्रॉफी गेम खेल रहे हैं या जस्ट एक क्रिकेट गेम खेल रहे हैं. लेट्स नॉट थिंक अबाउट वी आर प्लेइंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. और ये ऐसा मौका मिला था सबको. किसी ने नहीं सोचा था कि ब्रिस्बेन में इतने सारे प्लेयर्स नहीं होंगे, अवेलेबल नहीं होंगे या इंजर्ड हो जाएंगे. किसी को नहीं पता था कि डेब्यू कौन करेगा. बट एक ऐसा मौका मिला था हमें कि टू जस्ट गो आउट देयर एंड एंजॉय आवरसेल्फ, नॉट टू वरी अबाउट व्हाट विल हैपन और अबाउट द रिजल्ट और एनीथिंग. सो इट वाज ऑल अबाउट कीपिंग इट सिंपल. सबको कॉन्फिडेंस दिलाना मेरा काम था, सबको सपोर्ट करना मेरा काम था और बैक करना मेरा काम था. एंड आई जस्ट डिड दैट. बाकी जो किया वो सारे प्लेयर्स ने किया इंडिविजुअली. बट आई थॉट बिकॉज ऑफ दैट बैकिंग, दैट्स व्हाट happened.